Hi guys, welcome to B Town with Box Office. This is Nadia with you, and today we have a very special guest, and I managed to physically grab him in Dubai to take his interview. And the talented, the versatile, the very senior, the very handsome, I must say that, very tall, very good looking, Mr. Shishir Sharma. Oh my goodness me, man! I mean, you guys are really, you're embarrassing me now. Absolutely not. I'm just blushing. All my 32 teeth, if I have them, are now being shown. With a beautiful smile. Amazing. Thank you so Thank much, you sir. so much. Aapne time nikala for me. Thank you. In Dubai with your busy schedule. I am humbled and I'm blessed. Thank you so much, Nadia. It is a chance meeting, and I'm happy that we've met. Absolutely. I've been talking to your mom very often on Facebook, and I did mention to her when I knew that I was coming to Dubai. I said I must at least meet her. Bilkul. I didn't know that she had such a beautiful daughter. Now I'm blushing. Yeah, thank you so much for having me on Box Office. Amazing. Sir, obviously थोड़ा बड़ी casual chit chat जी, with बिल्कुल. coffee with you, and in the end थोड़े से fan questions जी, बिल्कुल. which have been collected from Dubai. जी. So amazing. Of course ये questions सब आपसे पूछते हैं, मैं भी पूछूंगी. So was it that आपने हमेशा से actor बनना था, या there was something else that you wanted to do? And नहीं, मैं how did you start? जैसे हम इंटरव्यू के पहले बातचीत कर रहे थे, a very informal chat. This is also going to be an informal chat. मैंने acting actually as a default, I have become an actor. Okay. लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जी मैंने कभी एक्टिंग ट्रेनिंग की नहीं, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं. That's hard to believe. स्कूल में, कॉलेज में. लेकिन 1974 में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आई स्टार्टेड एक्टिंग सिंस 1974. There was a play on stage, and I think stage is probably the place for any actor to be. जो immediate appreciation मिलता है वो सिर्फ स्टेज से मिलता है. आप फिल्म देखेंगी, मुझे फ़ोन करेंगी, एक फ़ोन कॉल में वाहवाही देंगी, ख़त्म हो जाती है बात. लेकिन 1000 लोग जब ताली बजाते हैं और वो गड़गड़ाहट जो होती है थिएटर में, इट इज़ अनबिलीवेबल. सो आई स्टार्टेड माई थिएट्रिकल जर्नी इन 1974, एंड आई कंटिन्यूड डूइंग थिएटर. आई लव डूइंग थिएटर. दिस इज़ वन मीडियम, वन एरिया where I would give anything above all to be in. अगर एक फिल्म भी आई और डेट्स क्लैश होते हैं, मैं फिल्म छोड़ दूंगा, लेकिन थिएटर की डेट नहीं छोड़ूंगा. वो आप किसी भी थिएटर एक्टर से पूछ सकते हैं, नसीर साहब से पूछ सकते हैं, मनोज से पूछ सकते हैं, आशुतोष राणा से पूछ सकते हैं, कुमुद मिश्रा से पूछ सकते हैं. ये मेरे बहुत ही करीब के दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं. मैं नसीर साहब को 1974 से जानता हूँ. रत्ना जी मेरी बाकी सिस्टर हैं, उन्होंने भी उसी समय शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था. हरीश पटेल हैं, सुनील शानबाग हैं, आकाश खुराना है, नीना कुलकर्णी है. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, अगर आप बात करेंगे उनके साथ तो आपको यही जवाब मिलेगा. Wow. सो आई थिंक वी आर वन Family, ग्लोबल fraternity. Absolutely. So it feels nice when people come up to you and say, "Oh, I saw you in that play," rather than "I saw you in that film." Wow, that's so amazing. And of course you're right, like you said earlier कि हमें किस तरह हमने ground से start किया था. जी. with हमने just, झाड़ू भी लगाई थी, स्वॉपिंग भी की थी, अपने खुद के कपड़े ट्रंक में डालते थे. हमारी एक वैन थी, खासकर हमारी एक मारुति वैन थी जो 14 साल तक हमारे साथ थी, और उस वैन के मुताबिक हम अपने प्लेस का सेट बनाते थे. टू टेक एवरीथिंग इन दैट वैन. सो इट बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, थिएटर. Fortunately for me, my wife was behind me. She never objected to me being in theatre. My kids loved being on stage. They never acted, but whenever there was a play, they used to come, they used to fool around on stage. So they had that discipline. Actor के लिए बहुत ज़रूरी होता है. I don't want to get serious, but I must say this. एक actor के लिए discipline बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. And of course it helps in family life and in professional Yes, life. absolutely. Amazing, Absolutely. amazing. Sir, of course, सबसे आप पूछते होंगे आपसे lately. Again, I'll ask the same question. You have worked with the late Shashank Singh in Chichore. How was that experience, and how was it like on sets being together? Oh, it was fantastic.
I completely enjoyed my 12 days of working in Chichore with Sushant. I had most of my scenes with Shraddha and Sushant. Apart from Sushant, I must say one line here for Shraddha Kapoor. I think she's such a beautiful human being. Humble, humility is fantastic. I never expected me. I mean, yes, I'm known. जी. That's okay. जी. But having to work with a person like Shraddha Kapoor, who has been there, seen it all, was a great experience for me. And of course, Sushant Singh. What can I say about him? I feel very sorry, very sad that he went too soon. जी. But he was a great guy to be on set with. We talked nothing about films, nothing whatsoever. We talked about the stars, we talked about the galaxy, we talked about astrophysics. I mean, that man was such a brilliant guy. And I don't want to say anything more. I'm sure. Good memories with time, of course. And sir, obviously, when I talk about versatility, आपने TV की है, आपने films की, आपने web series की है, of course. How is the difference? मतलब तीनों different modern हैं. And of course, theatre भी किया आपने. So I think you've done it all, multitasking. आप सब I have done करते it, हैं. yeah. I think I'm proud of the fact that I've done it all. I have done commercials as well. जी. I have done voiceovers too, and I still keep doing voiceovers because जी. I think that is one of the most exhilarating forms of media, where in 60 seconds आप जब कमर्शियल करती हैं तो एक टैगलाइन होती है. वो टैगलाइन 60 सेकंड्स में आपको पूरी दुनिया को बताना है कि वो टैगलाइन क्या है और वो कमर्शियल क्या है. सो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली एक्सिलरेटिंग एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न. जो कैमरा नहीं होता है आपके ऊपर, सिर्फ आपकी आवाज़ के साथ आपको वो स्टोरी 60 सेकंड में बतानी होती है. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. बट येस, टेलीविज़न दोज डेज एंड नाउ ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Everybody knows when you used to do DD1 at that time in Mumbai, in India, there was Shanti and there was Swabhiman. जी. Shanti एक साल पहले आया था, Swabhiman उसके बाद आया. And I think both were iconic shows, both were cult shows. बिल्कुल. और स्वाभिमान के स्टेबल से, मैं स्टेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स उस शो से निकले हैं. रोहित रॉय से लेकर किट्टू गिडवानी, दीपक पराशर, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, माई सेल्फ, कुमुद मिश्रा, हर्ष छाया, बहुत सारे एक्टर्स थे जो स्वाभिमान के स्टेबल से निकले थे. सो दैट वाज एन आइकॉनिक शो. शांति वाज अनदर आइकॉनिक शो. मंदिरा बेदी, हु कैन फॉरगेट मंदिरा बेदी इन दैट शो. उस ज़माने के टेलीविज़न में और आज के ज़माने के टेलीविज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज देयर इज सच अ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस दैट हैपन्स इन टेलीविज़न दीज डेज इन इंडिया when you're doing satellite television. जी. उस समय जो प्रोड्यूसर ने कहा, जो डायरेक्टर ने कहा, जो स्क्रिप्ट आती थी, बस वही लकीर थी. जी. There was no changing there. But now there's a lot of interference with the channels, with the production houses, sometimes with the actors as well. So, and web series is given a great opportunity for actors and technicians, more so than actors. बहुत सारे लोग को employment मिली because of the web series. Absolutely. And of course, huge talent, untapped talent in this country has come out. जैसे इंडियन आइडल होता है बिल्कुल. या जो भी सारेगामा होता है और बच्चों Dance के India, लिए, Dance बड़ों के India. लिए, Absolutely. जहाँ कहाँ से भी टैलेंट आता है तो खोज के ही निकालना पड़ता है ना बिल्कुल. टैलेंट. तो सेम वे आई थिंक द सेम kind of principle has been applied here for the web series as well. Cameramen, focus pullers, people who've been doing AD jobs have got no time now because web series. बिल्कुल. अगर आप किसी एक फिल्म के बारे में पूछेंगे कि यार आई वांट दैट गाय हु डिड द फर्स्ट एडी इन माय फिल्म, वो चांस नहीं है आपको मिलेगा क्योंकि ही इज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, ही इज गॉन ऑन टू अ बिगर प्रोजेक्ट प्रोबेबली. पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलते हैं, वेब सीरीज़ में भी पैसे हैं, लेकिन या अभी फाइन अनफॉर्चुनेटली ये दौर ही कुछ
अलग है. बिल्कुल, So I बिल्कुल. think yeah, all in all, it's a very good space that we are in at the moment. Amazing, So amazing. people will find it. People will feel happy about the fact. Amazing. अच्छा सर, आपने इतनी फिल्में की, इतनी सीरीज, वेब सीरीज, व्हाट मेक्स यू चूज अ स्क्रिप्ट? जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, जब आपको कोई अप्रोच करते हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू फील, यू नो, ओके दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू? If it appeals to me from inside, whether there's a line or no line, it doesn't really matter. ओके. Because most actors feel कि अगर आपके पास line नहीं है, तो there is really no point in doing it. My question to all actors today is, yes, mind it. My question is, do you find it difficult or easy to act without lines? I think it is the most difficult thing to do for an actor, to portray something without the lines. Lines के साथ तो कोई भी बोल देगा, इमोशन के साथ, लेकिन उसी बात को अगर आपको बिना लाइंस के अगर कहना है, तो क्या आप कह पाएंगे? तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि नहीं, लाइंस नहीं है, हम नहीं करेंगे. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लाइंस नहीं हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता. लोग नोटिस करते हैं उसको कि यार उसने बिना लाइंस के कुछ कहा है, आंखों से काम करता है या हाथों से काम करता है. जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स मस्ट बी अ लिटिल मोर accommodative in the sense that if there are no lines, it really doesn't matter. So when something appeals to me from the inside, instantly I say yes. Amazing. And if somebody narrates a story to me and says, sir, ये ऐसी स्टोरी है, मैं टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म और वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ. जी. ऐसी स्टोरी है, ये आपका कैरेक्टर है, आप इतने एपिसोड में आएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं 2 एपिसोड में आऊँ out of 8 episodes, but that has got to be, there's got to be some meat in that character to do. अगर एक सीन भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. मैंने सत्या में सिर्फ एक सीन किया था, मेरी पहली फिल्म थी राम गोपाल वर्मा के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ. जी. लोग अभी भी उस फिल्म का जिक्र करते हैं और उस सीन का जिक्र करते हैं. तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 10 सीन है या 2 सीन है, अगर एक सीन भी हो तो आई एम ओके विद इट, बट इट हैज़ टू बी अ नाइस मीटी सीन टू डू. ग्रेट. आपकी वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद मनोज बाजपेयी, बहुत आप लाइक यू सेड, सत्या से यू गाइस हैव बीन टुगेदर, एंड इवन बिफोर दैट ऑन टेलीविजन, स्वाभिमान से गाइस हैव बीन टुगेदर. रिसेंटली साइलेंस रिलीज हुई, बहुत ही पसंद की गई, एंड बहुत ही उसका वेलकम वाज वेरी नाइस, पीपल लव्ड इट. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मनोज जी अगेन ऑन अ वेब सीरीज दिस टाइम? Fantastic. I mean, me and Manoj, when we met for the first time on set, we were rather embarrassed. Okay. We didn't know whether we should hug each other or not hug each other. Oh yeah, due to the pandemic. No, yeah. not due to pandemic, because we were meeting after a very, very long time. Okay. And we were working after a very long time. बिल्कुल. तो of course वो थोड़ा सा play किया हमने. But yeah, I think Manoj is a fabulous actor. Absolutely wonderful actor. He's such an instinctive actor to work with, because when you work with an instinctive actor like that, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आता है उसमें, आपके लिए भी और उसके लिए भी, and for the betterment of the product. जी, बिल्कुल. तो Silence, when we read the script, when we individually read the script with the director Abhan, we thought that yes, there is a lot in this to do. And the character that I was playing had a lot to do with Manoj in the film. So I felt very happy that I was working with a man whom I consider to be one of the finest actors in this country, in India. Really, I'm not saying this on camera because Manoj is a friend, but I'm saying this because Manoj is truly a fabulous actor. Fabulous. Amazing. So आपने इतनी वेब सीरीज की हैं, and of course I'm sure in the future also. Again, the question is that do you think web series is something that families अब बहुत careful होती हैं देखने में nowadays due to the scenes or the violence? It's too open, and compared to you've done television, and वो हर घर में एक household में एक सास बहू used to be there. So do you finding it difficult? I'm finding it a little strange that the production houses or the channels want to titillate the audience by doing something which is really not necessary. जी.
Even if it is not necessary, if it is not scripted, why do you want to put something in a show that will titillate the audience to such an extent that you cannot have your 14-year-olds sit with you and watch? Absolutely. You have a 14-year-old daughter. Absolutely. Mani has a 14-year-old son. Absolutely. Would you think you would invite them to watch with you a show like that? Even if you wanted to, you cannot. You never know. Sometimes suddenly something will spring out of the box. आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया. And then you feel very embarrassed. I have done many shows. I have done a show like What the Folks, which is on YouTube. Dice Media, Renuka Shane, whom I have known for 45 years but never worked with her. Worked with her for the first time. 3 seasons we've done. It's such a clean show. There's not a word. You can have your 5-year-old sit with you and watch the show. They may not understand what the show is, but you will not have any qualms in having your 5-year-old sit with you. So I think a disadvantage to the viewers is that too much of sex, too much of violence, too much of foul language is being used unnecessarily. Not many people will agree with what I'm saying, but this is completely my opinion. Your opinion, absolutely. So, and sir, obviously we all are suffering through this pandemic. How do you think the industry is being affected, and how long do you think मतलब काफ़ी लोगों पे affect पड़ गया है? बहुत unfortunately बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है इंडस्ट्री पे. पिछले साल भी यही हुआ था. काफ़ी लोग चले भी गए थे अपने गांव, और उनको वापस लाना एक और भी दिक्कत वाली बात थी. जी. अब ये दोबारा से ये पैंडेमिक शुरू हो गया, तो आई थिंक हम जितना भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से. आई डोंट नो, आई मीन नाउ दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ. वी वर टॉकिंग अ लिटिल while earlier as well. अब ये मास्क अगर पैंडेमिक नहीं भी हो तो हमको एक आदत सी पड़ गई है कि रोज़ सुबह मास्क पहन के निकलना है. बिल्कुल बिल्कुल. I don't know how it will feel without it. I know. It'll be very strange. You know, I was walking in the mall just now, and I changed my T-shirt to come for the interview, and I came out without the mask. Oh. And my wife told me, mask. Thank God I looked around and there was no security. Otherwise they would have pulled me up. Oh God. And I think they fine also. So एक वो आदत सी हो गई है मास्क की. तो जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, आई होप कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जी, तो हम मास्क पहन के बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सर, आपने इतना टेलीविज़न, मूवीज़, वेब सीरीज़ की हैं, थिएटर किया, आपके दिल के करीब कोई शो या कोई फिल्म जो आपके यू हैव फॉन्ड मेमोरीज विद? माय fondest memory of a play that I did way back in many years back. I don't know how many years back. There was a play called Avinash, which our theatre group did. We also run a theatre group called Arpana, Okay. which we formed in 1985. So we've done a lot of theatre under that banner. And there was one play called Avinash that I've done with Sunil Shanbag, and my mother also acted in that play. Wow. She was an actor as well. And after that I did a play called Siddhus of Upper Juhu with Rajit and Shanaz Patel. Laugh Riot, complete laugh riot. We had come to Dubai in 2016 to perform. I think we performed at the Mall of Emirates. We did 2 shows in Dubai. It was a laugh riot completely. और फिल्म अगर आप मुझसे पूछेंगी तो एक ही फिल्म है जो मेरे जहन में आती है, वो है राज़ी. ब्रिलियंट फिल्म. राज़ी मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बिकॉज इट हैज़ गिवन मी अ न्यू पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर. इट हैज़ गिवन द पीपल अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट मी एज एन एक्टर. सो आई थिंक इट इज़ द क्लोजेस्ट टू मी इन माई हार्ट. Meghna ji, I thank you so much. Thank you so very much for even casting me as Brigadier Sayyid in Razi. Absolutely. Okay, amazing. Sir, fan के questions बहुत सारे pending है. Serious questions तो हो गए. इससे पहले वो मुझे कहें कि I did not ask them their questions. Great. So, अली पूछ रहे हैं आपका favorite खाना? मेरा favorite खाना बहुत ही simple सा खाना है. Okay. मैं एक सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ. अरहर की दाल
Okay. चावल, आलू की सब्ज़ी, 2 हरी मिर्च, 1 पापड़, बस Done. मेरे लिए बहुत मतलब आई कैन ईट दैट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे। Awesome, awesome. सारा पूछ रही है बेस्ट फैन कॉम्प्लीमेंट. ओह बहुत सारे हैं यार, मैं अभी सारा आई एम सो सॉरी बट आई डोंट नो, आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन फैन कॉम्प्लीमेंट. येस देयर बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैन कॉम्प्लीमेंट्स सिंस द टाइम Razi released, जी. since the time Bard of Blood came, since the time What the Folks came. So they've been huge number of compliments, and thank you very much for even asking me this question. I really cannot pinpoint any one particular fan compliment. Amazing. Ruby, dream director or anybody on your wish list that you would still like to work with? Can be an actor, can be a director. Dream director, there's one, Meghna Gulzar. I will give anything to work with her again. Nitesh Tiwari is another very fantastic actor, director. I think he is so good. I worked with him in Dangal, I worked with him in Chichore, and he's a brilliant director. So is Meghna Gulzar. I mean, these two are my favorites, complete favorites. Any actor? Nasiruddin Shah, I don't go beyond him. Okay. Amazing. Hussain, आपके favorite actor and आपकी favorite actress can be new, can be old. It's My favorite actor, of course, is Nasiruddin Shah. Okay. My favorite actress is Rekha. oh wow, I've met her. She's amazing. Vijay, your biggest fear? Failure. I think, I don't know whether I have set myself a standard, a high level standard, or whether the audience has put me on a pedestal where I cannot go down. So that's my biggest fear. I don't want to disappoint anyone, not even myself. Amazing. Besides acting, अगर आप actor नहीं होते तो आप क्या होते? देविका. अगर मैं एक्टर नहीं होता तो वैसे भी मैं बिजनेसमैन था. Okay. मैं बिजनेस ही कंटिन्यू करता मैं. Okay. और हाँ, मैंने पिताजी के साथ बिजनेस शुरू किया था 1978 में, और अभी तक बिजनेस करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है. लोग पूछते हैं मुझसे कि हाउ डू यू मैनेज बिजनेस एंड एक्टिंग. So I said I have a smartphone, I have a laptop, and that's it. That's it. You're You good to go. don't- Yeah, I'm not one of those businessmen where I have to travel. Everything is done. I am only an agent in India for industrial goods, which I represent from Czechoslovakia. So I do that business, and I sit in my office. I have a very small little office, cozy little office, and I go there. Amazing. शाहज़ैन पूछ रहे हैं कि he wants to know basically the newcomers जो आते हैं industry में, they come with a lot of dreams and glamour, and when they actually enter the industry they get disappointed, and they whether to take extreme steps or they pack up. So any tips for them? 21, 22 years up industry में, I think maybe more. And Yes, I've been in this industry since the year 1994. जी. If you talk about the film industry, television and film. But one aspect which I have also seen is people get disillusioned very fast. The problem here is that they don't have patience. जी. They come with dreams. They come with dreams which are not realistic. They have to understand that you cannot come to a city like Mumbai and tomorrow morning get a job. जी. There is a huge struggle that happens. You have to be prepared to go through that struggle. लोग भाग के आते हैं, माँ बाप से झूठ बोल के आते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के आ जाते हैं, कुछ पैसे लेके आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ रह लेते हैं कुछ दिन, उसके बाद क्या? ये सब चीज़ें सोच के आनी पड़ती हैं. You just cannot pack your bags and say, okay, I'm going to become an actor, I'm going to Mumbai. No, it doesn't happen like that. And it is not necessary that you will get a job immediately. कुछ लोग हैं जो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उनको काम मिल जाता है, लेकिन this is not a general view. So I think it is necessary for people to be patient, to learn the work the hard way. Everybody does not and is not born with a golden spoon. Everything does not come on a platter. शिद्दत से काम कीजिए, you will succeed. And success does not come so easily. Any field, whether it is
film industry, whether it is a corporate world, whether it is the kind of work that you do, you have to grow. You have to cross those hurdles. Then Absolutely. you can say that yes, I have now arrived. I can take my time and take my time properly. I have a family. Doesn't matter. 3 दिन में वहाँ चली गई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. So I think लोग, and especially youngsters, especially the 21 and 22-year-olds, must understand that हम कहते हैं ना, हिंदी में कहूँगा कि एक्टिंग खाने का लड्डू नहीं है. Acting खाने का लड्डू नहीं है. So that's, we'll take it on that. Those are such amazing tips coming directly from sir. Thank you so much. Thank you so आपने much, time Nadia. निकाला. Thank you. And I'm Thank so you. happy that you took out time for Thank me you and you so, came so on the very show. much. Thank you so much. And Lovely. be safe and Yes, be happy. you too. Be safe, be happy. Take care of yourself and your family. Thank you so Thank much. you. Thank you.